Hi everyone, welcome to Korean Express YouTube channel. In this video, we are going to learn about a very important Korean particle, ui. It is also known as the Korean possessive particle. Okay, we already learned three Korean particles, that is the topic marker, the subject marker and the object marker. Now let's see another very important Korean particle, ui. Now we already know that if we pronounce "i" on its own, then it will sound like the combination of "i" and "e", that is "i". Okay, अगर आप इसे as a syllable pronounce करेंगे तो इसका pronunciation होगा "ui". But if "ui" is used as a particle, then it is more often pronounced as "a". Okay, जब इसे हम एक पार्टिकल की तरह यूज करते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन ए हो जाता है. ओके, कीप दिस इन माइंड. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ दिस पार्टिकल? इट सिग्निफाइज पोजेशन ऑफ ए नाउन ऑन अनदर नाउन. ओके, इट इज वेरी सिंपल. वील अंडरस्टैंड इट थ्रू एग्जाम्पल्स. ओके, नाउ इसका रोल इंग्लिश में जो अपोस्ट्रोफी एस का रोल होता है उसके सिमिलर होता है. ओके, द role of an apostrophe followed by an S in English is similar to the role of this particle a, right? Now let's see how to use a in a sentence. It attaches directly to a noun followed by another noun. Okay, let's see examples to understand it more clearly. Suppose I have to say in Korean language, the teacher's cat. Now here यहाँ पर जो टीचर है ना वो एक पोजेशन शो कर रहा है अपनी कैट पे, राइट? थिंक इट दिस वे. सो हियर ऑल्सो अपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड इन इंग्लिश. तो इसकी जगह क्या यूज होता है? ए. सनसेंग में कोयांगी, टीचर्स कैट. हमारा फोर्स पड़ रहा है इस पर्टिकुलर वर्ड पे, टीचर्स, राइट? लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल. दैट पर्सन्स बैग. 그 사람의 가방. राइट? दैट को ख, पर्सन्स सारा में, पर्सन इज सारम, एंड क्योंकि हमें यहाँ पोजेशन शो करना है तो क्या यूज होगा? ए. एंड बैग इज खाबम. वेरी इजी. नेक्स्ट इज द डॉक्टर्स ग्लासेस. 의사의 안경. नाउ हियर नोटिस वन थिंग. 의 here it is used as a syllable in a word. ओके, तो इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे नॉर्मल प्रोनाउंसिएशन है, उई. एंड हियर इट इज यूज्ड एज ए पार्टिकल, तो यहाँ इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? ए. 의사의, राइट? रिमेंबर दिस डिफरेंस. हियर 이 is a syllable and here it is a particle. Okay, now let's move forward. We know that I or me in Korean is either na in casual form or छ in formal form, right? I और me का Korean translation या तो ना है या छ है, according to the honorific level, right? Now अगर मुझे इसे my में convert करना है, now my is a possessive form of I or me, right? My मतलब हम possession show करना चाहते हैं. Okay, then you need to attach a to them. जैसे छ के साथ ए अटैच किया तो छए. इट मीन्स माई, राइट? ना के साथ ए अटैच किया तो नाए, माई. बोथ मीन माई, छए नाए. ओके, फॉर एग्जाम्पल you have to say my home or house. Now how you are going to say? छए छिप, राइट? यहाँ पे पोजेशन शो करने के लिए क्या यूज किया है? ए. तो आई से क्या बन गया? माई, राइट? माई हाउस, छए छिप. फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू से माई बुक, नाए छेक, राइट? नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल नोटिस दैट छए एंड नाए दे आर शॉर्टेंड एज छे एंड ने. ओके, ये सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन और अच्छे फ्लो से हो सके, और रिटन फॉर्म में भी आप इन्हें झे और ने लिखते हो क्योंकि इससे सेंटेंस का फ्लो अच्छा होता है, सेंटेंस शॉर्ट बनता है.
तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल नोटिस दिस. ओके, कोरियंस बहुत कम यूज़ करते हैं ए, वो डायरेक्ट छे और ने ये लिखते हैं. छे नाए बहुत कम यूज़ करेंगे वो. ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग दैट व्हेनेवर यू नोटिस छे और ने इन अ सेंटेंस इट मीन्स माई. ओके, for example you have to say my home or house. So how you are going to say छे छिप. Okay, it means the same. छे छे एक ही बात है. Okay, next example is my book. ने छेक. Okay, very easy to understand. So whenever you have to convert I or me to my, then you are going to attach a to छ or na. Okay, now let's see some example sentences to understand the use of this particle more easily. Okay, first is a very important sentence. If you want to learn any language, then first thing that comes in your mind that how I am going to introduce myself in that language. Okay, so here it is. My name is Jin. 저의 이름은 진입니다. Right? my का 저의, name को कोरियन में कहते हैं इरम, and 진입니다 is 입니다 is to be verb. We all know about this. So the Korean translation of my name is Jin is 저의 이름은 진입니다. आप यहाँ पे अपने नेम के साथ इसे चेंज कर सकते हो. Let's see another example. This is my friend's book. 이것은 저의 친구의 책이에요. Right here, a particle has been used twice. Why? पहले तो my को डिनोट किया छय, उसके बाद friends, तो यहाँ पे apostrophe s को भी a से डिनोट करेंगे 친구의, my friends, छय 친구의. Right? So this is how you can use this particle more than once in a sentence. Okay, ऐसा नहीं है एक बार ही यूज कर सकते हो इस सेंटेंस में. No, जितनी बार आप पोजेशन शो करना चाहेंगे उतनी बार a particle यूज होगा. Okay, next is the doctor's glasses are expensive. 의사의 안경은 비싸요. Right? Very easy. ये चीज ध्यान रखना. यहाँ पे it is being used as a syllable, तो इसका pronunciation normal है. यहाँ it is used as a particle, तो इसका pronunciation a हो गया. Okay? Next is I played with my teacher's dog. 저는 저의 선생님의 강아지와 놀았어요. Here सबसे पहले I का translation 저는, then I played with my teacher's dog. My teachers. My teacher को कैसे लिखेंगे? छय संसिंगने में. वो जैसा हमने my friends में किया था सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है. My teachers. Okay? 저는 저의 선생님의 강아지와 놀았어요. 강아지와 it means with dog. वा जो particle है ये with denote करता है. Okay? And 놀았어요 means played. Right? So this is how you use the Korean possessive particle. I hope you liked this video. Don't forget to like, share and subscribe Korean Express YouTube channel. Thank you.